Good morning, friend. This is Dr. Abhishek Kumar once again in your service. Today, the topics we have the garden. The same topic is also known by its name, like the thought in a garden. This is simply a beautiful poems by a metaphysical poet Andrew Marvell, and just a collections and the recorded thought when Andrew Marvell was in a garden since thinking that how the mans are stupid, that being run after the beauties, the real beauties we have, we all are just waste our times running after the materialistics, physical pleasures, the physical satisfactions that is not permanent, that ruins by the next day. So it's just a in short brief idea about the poems, but first we will go through the stanzas we have, the following the rhyming pattern, like we can see here. Amage, the sound we have is j, another one is j, that means ia, then we have a c, next we have a tree, that means the sound is bb, then again c, cc, then we have a dt. That is the rhyming patterns that is being followed in that poem. So for your convenience, I will also explain this poems in Hindi also. So the first lines we have, how vainly man themselves amazed. That means the poets and marvels is thinking over, and we can say criticizing over the stupidity of man. The poet says कि how vainly man, by no means बेकार में, व्यर्थ में, किस तरह लोग जो है themselves amidst to win the palms, and they are surprised, they are getting pride over winning the palms, oak and bays. Palms, oaks, these are simply the name of some trees, इसके नाम है, but पहले लिटरली इसकी मीनिंग जान लेते हैं कि सबसे पहले राइटर कहते हैं कि किस तरह लोग व्यर्थ में जो है अमेज्ड रहते हैं, सरप्राइज्ड है इस बात को लेके कि उनको ओक बेस और फैम्स के ट्रीज मिल गए हैं. अब यहाँ पे द थिंग्स वी हैव टू नीड, वी जस्ट हैव टू नो हियर इज द फर्स्ट वी हैव palm. It is a symbolic, the words that is used that represent something's other, like the palm trees represents here the military virtue. तो इससे ये पता चलता है कि लोग बेकार में मिलिट्री वर्च्यूज के लिए, एक मिलिट्री ऑनर्स के लिए जो है व्यर्थ में ऑनर मिलने के बाद दे फाउंड टू बी अमेज्ड. द सेकेंड वी हैव द ओक. ओक simply stands for the civic qualities, the civic honor that one received for his beautiful civic efforts and all that. The third we have the bays, the babes that we also call the laurel trees. ये चीज़ ये पोइट्रिक ऑनर के रूप में दिया जाता है. इन शॉर्ट हम इस दो लाइन से वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि लोग जो है व्यर्थ में बेज ओक्स और palms, दैट मीन्स कि पोइट्रिक ऑनर, सिविक ऑनर, मिलिट्री ऑनर्स के पीछे व्यर्थ में भागते रहते हैं. एंड देयर अनसीजन्ड लेबर सीज, एंड वी कैन सी, वी ऑल सी, हम लोग देखते हैं कि वो लगातार अनकंट्रोल इन्फिनिट अपनी जो मेहनत है इसके पीछे लगाए जा रहे हैं. ग्रोन फ्रॉम अ सिंगल हर्ब्स और ट्रीज, वो सिर्फ क्रॉन्स के लिए, तो क्रॉन दैट मीन्स द ऑनर, उस ऑनर के लिए जो सिर्फ इन सब पाम्स, ऑकस, बेस के जो ट्रीज़ हैं इससे जो बने हुए जो सिंगल्स ग्राउंड होते हैं उसके लिए. दैट मीन्स कि सिंपली इस छोटे से मिलिट्री, सिविक और पोइटिक ऑनर के लिए ये इतना एफर्ट्स करते हैं.
whose short and narrow were said, thus prudently their toils upwards. Whose short and narrow were said. Let me first read the 4 lines we have. Whose short and narrow were said, thus prudently their toils upgrades, while all flowers and all trees too close to weave the garland of repose. इस 4 लाइन में we can find an essence of comparison कि the human activities that the running after military civic and poetics honors इसके पीछे जो भाग रहे हैं उस शॉर्ट एंड नैरो वर्ड सेट्स, ये जो क्रॉन्स के जो शॉर्ट नैरो वर्ड सेट्स होते हैं, दैट मीन्स कि इसको वेयर करने के बाद जो प्राइड फील होता है, आपका सोशल इमेज जो भी बनता है उसको फील करने के बाद दस प्रूडेंटली देयर स्टॉल्स अपडेट्स, आप सिर्फ अप्रिशिएट किए जाते हैं फॉर अ मोमेंट्स, एक क्रिटिसिज्म के लिए, एक अपब्रेड्स के लिए जो है सारे एफर्ट्स आप करते हैं, जबकि फ्लावर्स, ऑल द फ्लावर्स एंड ऑल ट्रीज डू क्लोज टू वीव द गार्डन्स ऑफ वर्ड्स। लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ये जब एक दूसरे से क्लोज होते हैं और जब इसको वीव किया जाता है तो क्लोज होके दैट मीन्स इन फ्रीली इन देयर फॉरेस्ट व्हेन इट बिकम्स सिंपली द गार्डन्स, एक गार्डन्स बनते हैं, एक झुंड बनते हैं, दैट ओनली गिव्स द प्लेसेस, दैट ओनली कीप्स द पीस, द काम टू वन हु जस्ट कम अंडर देम, जो उसके छाँव में जाता है उसको वो सिर्फ शांति और आनंद ही देता है। So in the first line we found that कि पोएट ने बताया है, इससे ये मालूम पड़ता है कि एंड्रयू मार्वेल is not satisfied with the state, we can say a kind of a stage that he crossed and finally tied with the materialistic world, जो दुनिया है उससे थक गए हैं, and being compared किया जा रहा है कि भाई ये सब बेकार है, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, लोग बेकार में इन सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, बट अगर देखा जाए तो जो है सिर्फ एक क्राउड के पीछे जो है एक, अगर हम कंपेयर करते हैं ट्री से, तो इस ट्री से जो है हमें सीखना चाहिए कि ये सारे जो है ये सब अगर वीव होते हैं तो ये वीव होने के बाद सिंपली एक तरह से गार्डन बनाते हैं जो सिर्फ रिपोज, जो सिर्फ शांति, काम्स, एक्सटेसी ही प्राप्त करते हैं। सो नाउ वी जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्टेंजा। Here we find fair quite, and then after we find the comma. Comma, that means you can see the comma here. So when there is a comma, and then we have to say, where quite have I found the hairs? That means it's just being addressed to one, who is one there. Here यहाँ पे फेयर क्वाइट, फेयर को और इनोसेंस, इन द सेकेंड लाइन्स वी हैव एन इनोसेंस thy sisters. These two different क्वालिटीज ऑफ one is going to be personified. इसको पर्सनिफाइड किया गया है जिसमें कहा गया कि फेयर क्वाइट, क्वाइट और इनोसेंस को, क्वाइट को कहा गया है कि अरे आई हैव फाउंड दी हेयर्स, अरे हमने हमको यहाँ मिला, एन इनोसेंस thy sisters tears. I have found here the quiet and innocence here. Both are said to be the sisters of one another or each other. दोनों के सिस्टर बताए गए हैं और कहता है कि हमने तो आपको यहाँ पा लिया. Mistaken so long I sought you then in busy companies of men. That means I had a mistakes long before that I was just trying to shout you, just trying to find you in that busy companies of men. क्योंकि लोगों की कंपनी में मैं इससे पहले आपको खोज रहा था. I was just looking for you, the quiet and innocence. खोज रहा था. Your sacred plants if here blows, only among the plants will grow, so that I dissolve but root to this relative solitude. Your sacred plants if here blows, आपके जो sacred plants हैं, that's you is simply used for to difference the personified things, quiet and innocence के लिए. और क्या था उसके आपके जो sacred plants हैं, that means
from the plant, from the trees of from the plants of quite an innocence, that we can find only quite an innocence. इससे तो हमके क्वाइट और इनोसेंस ही मिलेंगे, बट हेयर बिलोज ओनली अमंग द प्लांट्स विल ग्रो. यहाँ तो सिर्फ प्लांट ही सिर्फ ग्रो करते हैं फॉर द नेम ओनली. इट डजंट हैव द क्वालिटी ऑफ दैट. इसमें क्वालिटी नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्लांट है फॉर नॉमेनक्लेचर ओनली. एंड ओनली अमंग द प्लांट्स विल ग्रो. एंड सोसाइटी इज ऑल बट रूट. सोसाइटी कुछ नहीं है बट रूट है. टू टेस्ट द डायलिसिस, टू दिस डायलिसिस थेरेपी, ये जो है the feeling of quite an innocence, that is amazing, that is fantastic, but that cannot be tasted, that cannot be observed by the society because they all are rude. We do not run after such things. हम लोग इस quieter or innocence के पीछे नहीं भागते because it's just a nature of us. और हम लोग क्या करते हैं, we just running after such the physically and the materialistic honor के पीछे भागते हैं, materialistic bliss के पीछे भागते हैं, but ultimate bliss we have in the nature. Now we have the second stanza. Next stanza we have no white nor red was ever seen so amorous as this lovely green. That means no white or red here. White. In literatures, every colors doesn't only a color, but it reflects the quality of some things. White is the representative of peace. We can find the peace if you just waving your white cloths. That means you just you want only the peace. You do not want to fight with one. आप किसी से लड़ना नहीं चाहते. एंड वेयर एज द रेड वॉज एवर सीन. सर रेड इज सपोज टू बी द साइन फॉर द पैशन, द रिवॉल्यूशंस. सो नो वाइट नॉर रेड वॉज एवर सीन सो आर्मस. ना ही वाइट को और ना ही रेड को इतना ज़्यादा आर्मस दैट मीन्स द पैशनेट, फुल ऑफ स्पिरिट, इतना नहीं दिखा गया एज दिस लवली ग्रीन. That means the lovely green, the color, the green color is the sign of, symbolizes simply the peace, symbolizes the beauty, the eternal beauty. और जो green जितना ज़्यादा passionate होता है उतना ना white होता है और ना ही red होता है. So इसलिए फॉन्ट लवर्स क्रूअल एज देयर फ्लेम्स. जो फॉन्ट लवर्स होते हैं, दैट मीन्स द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द वंस इंसिडेंट्स दैट ही मस्ट हैव सीन इन द गार्डन्स, just having activities of a couples. That is simply we can also see in the gardens that the couple is engaging themselves with encarving the trees and writing over their names. So that kinds of scene we can find there. कि cutting these fond lovers cruel as their friends. जो fond lover होते हैं, the passionate lovers जो होते हैं, they all are as cruel as their flames. जितने passions उतने के जो flame होते हैं उतने ही ज़्यादा वो cruel भी होते हैं. Because they cut in these trees their mistress names. Because they encarved the name of their mistress. अपनी lady love का नाम जो है अपने उस पेड़ पे लिखते हैं. But little alas they knew or hid. But they all are stupid. Simply, the writer is saying here that they all just stupid. Stupid in the sense they are just they have a lack of wisdom. They have lack of experience. They have lack of knowledge. उसके पास knowledge नहीं है. So they do not know about all that. They do not pay heed towards the little. They do not have little knowledge about that. एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा knowledge भी उसके पास नहीं है that how far these beauties are exceeds. कि जिस beauty को वो encarved कर रहा है, जिस trees को वो invert कर रहा है, तो that trees is 100 times more than beautiful than their lady love is.
कि उसकी जो लेडी लव है उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर जो है वो ट्रीज हैं. Fair trees, wheresoever your walks I owned, no name shall but your own be found. लोग तो जाके पेड़ों पे अपने नाम जो है छाप दिए रहते हैं, but ultimately we just embarked the name of our lady love. हम जो पेड़ पौधे में घाव बना देते हैं, so just writing her names. तो वो नाम जो है no name shall but your own be found, किसी का नाम नहीं लिखते हैं, but ultimately it was the name of the trees. So this is enough now, and in the next video we will discuss next about the rest of the poems we have. So thank you so much, and if you really wants to see the next stanza, the explanations of the next stanza, you must comment and write there. Hello. Hello. Nothing else.